माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आज हम इसके अंदर इस चीज के बारे में वी आर कंसर्न अबाउट द सम basic concept and principle of managerial economics and how can we sustain and control the cost and the supply and demand of the market of the production. So before it we will have to understand the basic concept of managerial economics. Number one, economic theory offers a variety of economic theory offers a variety of concepts which can be considerable assistance to the managers, which can be considerable assistance to the managers in decision making. Economic theory offers a variety of concepts. Economic theory offers a variety of concepts which can be considerable assistance to the managers. किस काम के लिए? In decision making. Economic theory, it means the managerial economics gives the institute of the managers to the persons about the knowledge of many fields. Variety of concepts. वो क्यों? Why is the necessary to give the knowledge of the many fields? वो because the managerial economics is the based on the fundamentals, concepts of capitals, managements that can any industry stand on it. इसलिए इसको जरूरी होता है कि हमें इसकी पूरी जानकारी ढंग से समझ में आनी चाहिए. विच कैन बी कंसिडरेबल असिस्टेंस. वो इसकी नॉलेज जिस व्यक्ति को होगी वो डेफिनेटली उसके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी. वो क्यों? टू द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग. वो समझेगा हर फील्ड के बारे में कि किस प्रोडक्ट की लागत, कॉस्ट उसकी किस हिसाब से मुझे रखनी है. What is the price of the product and what is the cost of the product and what will be achieve the profit from the production of the product. तभी जाकर के
पॉसिबल होगा जब ही कैन नो द वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ओके, नेक्स्ट. These tools, these tools are, these tools are helpful, helpful किनके लिए? To the managers, to the managers. ये जो इकोनॉमिक थ्योरी के प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, वे मैनेजर्स के लिए बड़े मददगार साबित होते हैं. टू द मैनेजर्स इन सॉल्विंग बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स. किस काम के लिए? इन सॉल्विंग बिजनेस related problem. Related problem. Okay. When he knows the tools of the business economics, managerial economics, that he can feel happiness. Why? Because he can't face any difficulties in the farm and industry. He knows the way to solve the problem. He knows the way to solve the problems. These are first taken as guides as decision. These are thus as guide as decision making. Decision making. Like that, the same concepts is related. Now, the basic concept of managerial economics, the theory of business economics offers a variety of concepts, means tools to the managers. He can be considerable assistance. Oh, why? Because the managers knows the way to solve the problems, any type of the business problems. If any situation created the problems to the managers related to the business, definitely he can solve it. So the managerial economics is helpful to the business managers, to the firms managers. इस तरह से वो डिसीजन भी आराम से ले सकेगा अगर उसे इन टूल्स के बारे में नॉलेज है. तो अब किस तरह से, हाउ कैन वी टेक द बेनिफिट फ्रॉम दीज टूल्स? सो द बिजनेस बेसिक कॉन्सेप्ट of managerial economics is very helpful and to know to any business managers from the firms if he wants to grow the company. Managerial economics. The tools, these are following as, कौन कौन से हैं? Opportunities, cost principle,
opportunity cost principle. Number two, incremental principle. Incremental principle. Number three, principle of time perspective. Perspective. Number four, discounting principle. Discounting principle. Number five, marginal principle. Marginal principle. These are the basic concept of managerial tool knows the manager. Number one, opportunity cost principle, incremental principle, principle of time perspective, discounting principle, EQ marginal principle. Now we talk on the opportunity cost principle. Opportunity cost principle. What is the opportunity cost principle? Now suppose that we knows very well about the first letters of the opportunity. So what is the mean of the opportunity? Opportunities gives the freedom to the person to know and take the steps according to the situations, and he manage himself. Cost principle. Now the words of the cost come into the economy and the accounting principle theory. It means when your product runs in the market in smoothly, any type of the hazardous doesn't create the terms, you can look out the wage and the situation, the times you can increase the product's cost so that the customer uh, doesn't feel to buy the product in difficult situation. He doesn't feel the cost of the product is increased. ऐसा जब आपको लगे कि आपका प्रोडक्ट स्मूथली रन हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप वहां पर मार्जिनल हिसाब से उसकी कॉस्ट में इंक्रीज कर सकते हैं. इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल. Incremental principle. Look out the theory of the supply and the demand. If any type of the difference is created in the market, that time you can get the benefit of the situation and you increase the price and the product demand according to the customer's choice. Okay. Both. Number one, we talk of the opportunity cost of principle. The opportunity cost of principle. This concept
works in both microeconomic and macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics. Math, abundant, math abundant use of fundamental concept of opportunity cost. Opportunity cost. Okay. The opportunity cost principle works in both macro and microeconomics. We study the both type of the economics, micro and macro. Micro gives the details about individual firms and macro gives the bulk of the firms. Make abundant use of fundamental concept of opportunities. So the principle of opportunity cost works in both type of the economics. Either the economics is related to the macro and micro. Now how can we uh, count the opportunity cost principle in macro and micro? Okay. By some examples we can understand like that. When an investor buys shares on the stock market, buys share on the stock market, he makes implicit difference and comparison with what is money could earn in bank. What is money earned with bank? Okay, these are as when an investor buys shares on the stock market, he makes implicit difference and comparison. What is money earns with bank? वो यहाँ देखेगा अपॉर्चुनिटीज कोस्ट को कि उसका पैसा बैंक में है, वहां तो उसको कितना अर्न होगा, अगर उस पैसे को वो स्टॉक मार्केट में यूज करता है वहां पर उसको क्या मिलेगा। मैं कंपैरिजन डिफरेंस
दोनों में अंतर पैदा देखेगा, जहां उसको बेनिफिट नजर आएगा वो उसी चीज को फॉलो करेगा। हाँ, इस तरह से he follows that his profit where he can get, and again he would think about someone। ओके, तो यहां पर वो कंपैरिजन करा, फिर बाद में वो इसी रूल को फॉलो करता हुआ ये फिर सोचता है कि अगर इस पैसे को मैं किसी और व्यक्ति के साथ में भी साझा करूं तो शायद मुझे बेनिफिट वहां पे और प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से द अपॉर्चुनिटीज उसको मिलती रहती है कि वो फिर उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रूल फॉलो होता है और व्यक्ति make a difference and take the good decisions about his money, about his profit, about the market, about the situation of the product. This type of the concept run with the individual person and firms and the large business portal. Okay, next. Let's consider the following examples about the concept. The opportunity cost gives the impetus to the investors to think a variety of the sectors we can understand by the following example. As number one, the opportunity cost, the opportunity cost, fundamental fund or the funds employed, cost of the fund employed in one's own business, in one own business is the interest that can be earned the operational cost of the funds employed in one's own business is the interest that he can be earned when he knows the ways to invest his money in various sectors that he calculated in comparisons to one another persons। वो जानता है
कि उसका पैसा उसके पास में अगर है, उस पैसे से वह कितना बेनिफिट कमा सकता है, या किसी बिजनेस के अंदर डाल करके, या फिर खुद का व्यवसाय स्टार्ट करके, किसका बिजनेस डाल करके वो उस पैसे को कई मल्टीपल कर सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स, कितना उसका अमाउंट है और उस अमाउंट से कितना बेनिफिट वो निकाल सकता है। तो गिव्स द फर्स्ट प्रिंसिपल टू नॉलेज अबाउट various sector of the fields that the persons can get much and more money and profit from the fund। ओके, इस तरह से वो कर सकता है। नंबर 2, the opportunity cost of using the opportunity cost using a machine to produce one product is foregone income which would have been gain profit from other product। Okay, the opportunity cost using a machine to product one product in foregone incomes which would have been gain profit from other product। यहाँ पर कंपैरिजन से उसको तात्पर्य यह हुआ कि अगर इस पैसे से किसी दूसरी मशीन के द्वारा मैं किसी यहाँ से प्रोडक्ट करूँ तो वहाँ कॉस्ट मेरी इतनी आती है, तथा अगर मेरी खुद की मशीन के द्वारा मैं करूँ तो मेरी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है। तो बशर्ते अधिकांश जो इंडस्ट्री स्टैंड है वो इस आधार पर भी स्टैंड है, वे खुद के प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे इस तरह के इन्वेस्टर्स के प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्योंकि वे अपनी खुद की यूनिट लगाने में उन्हें काफ़ी बड़ा संसाधन और कैपिटल की नीड होती है। लेकिन पहले से ही एस्टेब्लिश जो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वे ऐसे लोगों की सर्विस करने के लिए रेडी रहती है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति अपनी कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेता है कि ही वेयर ही कैन गेट मच एंड मोर प्रोडक्ट। इफ ही एस्टेब्लिश ए न्यू फर्म्स एंड कंपनी, इट मीन्स a many heavy largification of the funds he needed to establish a farms, and how many days after how many days he can get the product profit। So first of all they don't they don't want to invest their valuable times, so he doesn't expense much and more funds to establish a farms, but he take the service of the other units and get the much and more profit of the product। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि कहीं दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है तो उसी का बेनिफिट लेते हैं, वहां अपने प्रोडक्ट का भी प्रोड्यूस करवाते हैं तथा उसकी कॉस्ट अपने हिसाब से रखते हैं। मैक्सिमम जो यूनिट्स है वो इसी आधार पर रन करती है, और क्योंकि वे जानते हैं कि अगर इस तरह की यूनिट भी एस्टेब्लिश करते हैं तो उन्हें बहुत बड़े समय तक जब उनकी कंडीशन ओके हो जाती है तो उसके बारे में सोचते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में वे ऐसा नहीं करते। तो ये भी एक इसका कारण है।
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे जनरेट करते हैं और समझेंगे कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द मैनेजरियल। ओके, थैंक यू।